हाय हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग माइग्रेट में ऑन मी टीवी। क्या आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं? तो आज का एपिसोड बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि we are going to talk about state-sponsored visa, especially Tasmania. And to give us more information about it, we have with us Girish from Aussizz Group. Thank you, Girish, for joining us today. How are you? Thank you, Sri. I'm doing fine. How are you today? I'm good, thank you. So let's start with the questions. The first question is, do you love Tasmania? Obviously, it's one of the beautiful state in Australia, and it's natural beauty there. So Very obviously, true. everyone love to go there for their for holidays during their holidays. So how many categories of the state-sponsored visa for Tasmania are available now? Okay, for Tasmania, there are two kind of categories are available. Okay. One category we call 489 visa. Okay. The other one category we call 190 visas. Okay. So the 190 visa is called for state nomination sponsored. For 489 we call it skilled regional sponsored provisional visas. Okay. So for, let's say, if you get a 190 visa, you get a permanent residence visa, but because the state is sponsoring, so you have to stay there. And for 489 it's a skilled regional provisional visa, where you will get a 4 years of temporary residence visa, and out of that 4 years of temporary residence visa, you have to stay 2 years, minimum 2 years in that particular region. Okay. And you have to show 1 year full-time job in any field, and then you can be eligible to apply for permanent residence visa. So the 489 visa will come with the condition PR. Okay. So what are the criteria for the 190 visa? For 190 visa, to be eligible to apply for 190 visa, you require minimum 60 points. In that 60 points, you must have minimum 55 points for your own, plus 5 points. State will add 5 points from with the 55 points. So in total, you can get a 60 points. So you require minimum 60 points. That's minimum requirement, basic requirement, which is from DIBP, which is called Department of Immigration and Border Protection. That's a minimum requirement to apply for 190 visa. Another requirement from state is minimum. You require minimum 6 bands in each. Okay. And your occupation must be falls in STSO list, which calls short-term skill occupational list. Yeah. And then you also have to meet the state requirement. So we talk about the 190 visa, the state requirements. There was a requirement from DIBP. Now we talk about the state requirement. For 190 visa, you must study that for minimum 1 year if you have enrolled before 31st of July 2017. If you have enrolled over there in any college, a CRICOS registered college or university, and if you have studied with 3, 4, diploma or above, bachelor or master, minimum 1 year, then you can be eligible for 190 visa. But you must be enrolled before 31st of July. Oh, that's fast. Yeah, but that is for 1 year study. But if you have enrolled after 31st of July, then you need to meet the 2 years of requirement. That means you have to study there for 2 years to be eligible for 190 visa. Okay. So then on the opposite side of the spectrum, so what's the criteria for the 489 visa? For 489 visa, the same thing. For study, we talk about the study first. When if you talk about the 489 visa, for 489 visa, you must study there for minimum 1 year, and you must require the DIBP requirement, which means you must have minimum 50 points, and the regional will give you 10 points from their side. Oh, they're giving more than what they were giving the 190. That's true. So those applicants who have studied here, and those who are categorized between 25 to 32 years age, they can get 30 points for age. They get a 15 for the study, and if they have studied here in Australia for 2 years minimum, they can get 5 points. So most of applicants who are applying for any kind of state or regional sponsorship, they have minimum 50 points, right? So they can get additional 10 points from the regional area. And to get a requirement from the regional, you must study there for minimum 12 months, a CRICOS registered course. And let's say if you have studied with 3, 4 or diploma or above level courses, bachelor or master, you can be eligible to apply for 489 visa. So that is for we're talking about the study. For 190 visa, we talk about the job for later. For 190, you must
have, if you want to apply, if you not have study, if you not study there, and if you not want to go for study, if you have applied for any kind of job over there, and if you get a job for later, so you can also can be eligible to apply for 190 to be eligible for 190 visa with the job for later. Your job offer letter must be in line with your skill assessment. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑक्यूपेशन, इफ योर ऑक्यूपेशन इज इन अकाउंटेंट, अगर आपका ऑक्यूपेशन अकाउंटिंग में है तो आपको अकाउंटिंग में ही जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए. तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट हैव 35 आवर्स, you must be getting a 35 hours per week minimum. Second, the company must be registered in Tasmania for minimum 12 months. That means वो ऑपरेट होनी चाहिए वहाँ पे 12 महीने से. ऐसा नहीं कि अब भी चालू किया और नहीं हो सकता ऐसा. नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि भी मैं वहाँ पे किसी का फ्रेंड है कोई, ऐसा नहीं हो सकता. यू मस्ट अप्लाई जेन्युइन, ए जेन्युइन, यू मस्ट हैव दिस जेन्युइन ऑफर लेटर. So within these two, ज़्यादा करके कौन सा people are opting for? For obviously, if you are studying, because it's very hard to get a job for later in your line occupation, so वो बहुत tough होता है क्योंकि तास्मानिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. तो वहाँ पे जैसे कि स्किल्ड जो होती है, स्किल लेवल 1 to 2 और 3 लेवल तक जो जॉब होती है वहाँ पे नहीं मिलती है. फॉर एग्जांपल मैनेजर्स, टेक्निकल्स, or maybe you can talk about the computer engineers or engineers. They're not engineer professional, they're not able to get a job offer letter over there because वहाँ पे वो industries नहीं है, वो requirement वहाँ पे नहीं है इतनी. But they, because of the government is supporting, so people can come and move to that state and then can live there. So growth के लिए वो support कर रहे हैं. The Tasmanian government is sponsoring because of they want to grow in that state. So अगर वहाँ पे लोग आएंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल खड़ी हो जाएगी और अदर स्मॉल बिजनेसेस कैन ग्रो ओवर देयर. सो ऑन दैट बेसिस दे वांट टू ग्रो देयर स्टेट ओवर देयर. सो दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स, तो स्टेट माइग्रेशन प्लान. तो उसके लिए दूसरी चीज़ थी 489 की हम बात कर रहे थे. वी आर टॉकिंग अबाउट द 489 जॉब फॉर लेटर एज वेल. So we are talking about the we talked about the 190 offer letter. तो वो आपके लाइन में होना चाहिए, इन लाइन विद द स्किल्स में होना चाहिए. 489 में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो 489 में क्या है, अगर आपका इन लाइन ऑक्यूपेशन में नहीं है तो अगर आपको कोई ऑफर लेटर मिलता है, ठीक है, तो उसमें 12 महीने का ऑफर लेटर मिलता है मिनिमम, तो आप उसमें या 3 महीने का, लेकिन ऑफर लेटर होना चाहिए मिनिमम 35 आवर्स पर वीक का, ठीक है. तो फुल टाइम अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर 489 वीज़ा, राइट. लेट्स से अगर आपने किया है बैचलर इन आईटी हियर इन ऑस्ट्रेलिया और आपके पास 50 पॉइंट है और आपका स्किल असेसमेंट हो गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, और वहाँ पे अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है एज ए कस्टमर सर्विस मैनेजर, तो यू कैन स्टिल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 489 वीज़ा. That's good. They have some flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी उसमें देते हैं. तो उसमें क्या होता है कि 489 में वी कैन अप्लाई फॉर विद द जॉब ऑफर लेटर. अगेन द रिक्वायरमेंट इज विद द एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉयर वहाँ पे एक्टिवली होना चाहिए 12 महीने का. सो दे मस्ट बी ऑपरेटिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस फॉर मिनिमम 12 मंथ्स. सो वो भी एक रिक्वायरमेंट है. तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी दोनों में, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड फर्दर, लाइक लेट्स से अगर आपने ओवरसीज एप्लीकेंट है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओवरसीज and if you not lived in any other state or territory in Australia for in last 12 months, so you can be eligible to apply for Tasmania state to apply for 489 visa in Tasmania state. वो 190 के लिए नहीं है, लेकिन वो Tasmanian state के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में स्टडी की है फॉर एग्जांपल और आपको वहाँ पे जॉब लेटर नहीं मिल रहा है, तो Tasmanian government also let's say offering the state sponsorship for overseas applicant. ये जो दो रिक्वायरमेंट हमने पहले देखी वो क्या थी, ऑनशोर एप्लीकेंट के लिए थी. Those who are studying in Australia or those who have been living in Australia are eligible for those categories, for those are meeting for those requirement. Because if you are in Australia you can study here, if you are in Australia you can apply for job letter. But those who are overseas, what about them? तो उनके लिए उन्होंने नई कैटेगरी स्टार्ट की है. उसमें 489 के अंदर अगर आप ओवरसीज से अप्लाई करते हैं, अगर आपको वहाँ पे जॉब लेटर मिलता है और अगर आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट
Tasmanian state occupation list में होता है तो कैन बी एलिजिबल. So Tasmania occupation list is different to other states. That's right. तो उसमें क्या है कि when you apply while in Australia, when you apply for Tasmanian state applications, your occupation must be in STSO. वो STSO list जो है short term skill occupation list वो immigration का है. अच्छा. तो उसमें मोस्ट ऑफ सारे आ जाते हैं, लेकिन तास्मानिया के भी अलग है. अगर आपका ऑक्यूपेशन एसटीएसएल में है, तास्मानिया में नहीं है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा. लेकिन अगर आप ओवरसीज में हैं, ठीक है, लेकिन आपका ऑक्यूपेशन एसटीएसएल में है लेकिन तास्मानिया स्टेट में नहीं ही लिस्ट में है, तो आप एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर आपको दैट्स ट्रू, यस. तो अगर ओवरसीज एप्लीकेंट के लिए उनका ऑक्यूपेशन एसटीएसएल में नहीं है तो चलेगा, लेकिन उनके तास्मानिया स्टेट ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है. और उनको उनकी ऑक्यूपेशन में जॉब लेटर मिलता है अगर वहाँ पे, इफ दे आर गेटिंग अ जॉब लेटर इन देयर ओन ऑक्यूपेशन, देन दे कैन बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर तास्मानियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर 489 वीजा ओनली. ठीक है. और 489 में और एक रिक्वायरमेंट एडिशनल है, जो है एडिशनल नहीं है, लेकिन ये इफ़ यू नॉट मीटिंग द अदर रिक्वायरमेंट, इफ़ यू नॉट हैविंग ऑफर लेटर, इफ़ यू नॉट स्टडी देयर, देन यू कैन मेक अ बिजनेस प्लान ऑन द बेस ऑफ योर स्किल. जैसे कि स्किल क्या है, अगर आपने कोई पास्ट में बिजनेस किया है, अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और अगर आपके कोई पास्ट में बिजनेस किया, ऑन दैट बेसिस ऑफ दोज रिक्वायरमेंट, ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, यू कैन मेक अ बिजनेस प्लान दैट on the basis of my experience, I want to open a business in Tasmania. Yeah, that's a good idea. A lot of people are very keen on opening businesses, and they have a good eye for it. That's true. So on the basis of those requirements, you can make a comprehensive business plan. On the basis of that business plan, government look at that business plan whether that is a potential business plan and that is a potential future of in our community or not. Okay. तो उसके बेस पे आपको इन्विटेशन देते हैं वो लोग. That's good. तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जिनको, जैसे कि बहुत ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो यहाँ पे आईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने के पास सेफ का और कुक का एक्सपीरियंस है, जिनके पास अदर ट्रेड का एक्सपीरियंस है, अदर चीज़ का भी एक्सपीरियंस है. तो ऑन दैट बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, इफ़ यू मेक द business plan, you can be eligible to apply for 489 regional sponsorship. That is a very good idea, and it's very good that the government is giving that opportunity as well. True. A lot of our viewers want to know, Girish, कि Tasmania में job opportunities कैसा है? देखो, मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने बोला था कि इट्स टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज ज़्यादा रहेगी. लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ पीपल आर स्टार्टेड टू मूव देयर, तो वहाँ पे स्किल आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों के पास एक अच्छी स्किल होती है, मैनेजर्स की स्किल होती है, टेक्निकल स्किल्स होती है, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की स्किल होती है. तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे स्किल्स आती है तो फ्यूचर में बहुत बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, बिकॉज दे वांट टू गेट अ जॉब ओवर देयर. तो उनको कंपनी को ईजिली जॉब उनको ईजिली वहाँ पे मिल जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो कंपनी भी वहाँ पे मूव हो सकती है. तो जॉब प्रॉस्पेक्टिव फ्यूचर में आ सकता है. अभी इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इट, बट इफ़ यू ट्राई इट यू कैन गेट इट. Okay, that's nice. Are clients eager to choose this option, and why do you think? Because a lot of clients who has got score of 60 points, let's say, to apply for permanent residence visa, अगर आप PR जब अप्लाई करते हैं तो you require minimum 60 points. अभी क्या है कि IT इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, ये 3 कैटेगरी ऐसी है जिसमें you require higher points. तो हायर पॉइंट के लिए क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट्स को, एप्लीकेंट्स को IELTS से PT में 18 इंच पेन लाना पड़ता है, विच इज़ अगेन वेरी हार्ड टू गेट अ स्कोर्स. दे हैव टू डू प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, दे हैव टू गेट एन एक्सपीरियंस. तो ये जो सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद वो 70 पॉइंट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं. उसके बाद उनको इन्विटेशन मिलता है, और उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशन जो सीलिंग्स होती है ना, वो बहुत लिमिटेड होती है. उसकी वजह से उनको इन्विटेशन मिलता नहीं है. सो दे कैन नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR. तो PR के लिए एलिजिबल नहीं होते. इसके लिए ये स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स वहाँ पे होता है. तो इसलिए आपको अगर, क्योंकि इसमें क्या है, 55 चाहिए 190 के लिए, 50 पॉइंट्स चाहिए 489 के लिए. तो मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स हैव दोस रिक्वायरमेंट, दोस पॉइंट्स. ठीक है, तो उसकी वजह से वो एलिजिबल इजीली हो जाते हैं. सो इट जस्ट
इट जस्ट लाइक मैटर ऑफ पुटिंग एफर्ट कि आपको अगर इन्विटेशन नहीं आया तो बेटर है ये ऑप्शन चूज करो। गिरीश, अगर आपको एक एग्जांपल चूज करना पड़े ए सिनारियो में, कोई चैलेंजिंग केस आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ? चैलेंजेस केस तो बहुत आते थे, जैसे कि अगर आपने ऑब्वियसली इफ़ यू हैव स्टडीड देयर तो आपको इजीली लाइक मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमें बनाना पड़ता है कि जैसे कि व्हाई यू वांट टू गो देयर, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ता है कि व्हाट यू अट्रैक्ट कि भी आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वी मेक कि भी व्हाई आई वांट टू मूव देयर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या फ्यूचर में उसकी आप उसको बोलते हैं कि भी मैं कमिटमेंट हो कि वहाँ पे 2 साल में रहूँगा वहाँ पे। It's like a personal affidavit that you have to say, yes, this is what I'm going to do. Also you have to say, commit that कि भी I will bring some kind of money over there and मेरे पास limited fund है to settle down in this particular state, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं so obviously इनिशियल स्टेज पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, इनिशियल स्टेज पे आपको कोई घर नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट दोज थिंग्स। तो ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियली कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो भी वो चेक कर दे कि है कि नहीं, और अदर कमिटमेंट रिक्वायरमेंट भी वो मांगते हैं, तो वो सारा हम डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं। लॉट ऑफ पीपल से इट्स वेरी इजी टू मेक एन एप्लीकेशन, बट आई वुड प्रेफर कि यू गो थ्रू द माइग्रेशन एजेंट, कि उसकी वजह से क्या होता है कि आप उनका केस इजी हो जाता है। डिफरेंट हाँ। चैलेंजेस में जैसे कि बिजनेस प्लान में बहुत सारे चैलेंजेस आती है, क्योंकि क्लाइंट ने किया होता है अकाउंटिंग या IT इंजीनियरिंग, और उनका एक्सपीरियंस होता है कुक में होता है, पेंटर्स में होता है, कोई और चीज़ में होता है, बहुत ऐसी सारी एक्सपीरियंस उन्होंने होता है। तो उनकी वजह से वो जो एक्सपीरियंस के बेस पे हम उनको हम नहीं बनाते, लेकिन उनको समझाना पड़ता है उनको कि ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। सो वी एक्सप्लेनिंग देम हाउ यू कैन मेक द बिजनेस प्लान, सो वी कैन ओनली हेल्प देम टू एक्सप्लेन कि वी नॉट मेकिंग द बिजनेस प्लान, बट वी हेल्प देम टू कि एक्सप्लेन दैट दिस वे यू कैन मेक अ बिजनेस प्लान। और उसकी वजह से हमें वो चैलेंजेस बहुत आती है कि वो समझाने के बाद भी वो जो जैसे बना दे फिर हमें उसको गो थ्रू करना पड़ता है, देन वील हेल्प देम अगेन, So you have to proofread it, everything. उसके बाद विल सबमिट द एप्लीकेशन एंड देन ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस है जैसे कि लोगों ने एप्लीकेशन की ऑन द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, उन्होंने स्किल थी लेकिन एप्लीकेशन डिफरेंट ऑक्यूपेशन में डाल रहे थे, दोनों अलग अलग चीज़ में थी, तो हमने बहुत सारे उनको हेल्प किया अप्रूवल लाने में। और लॉट ऑफ पीपल कमिंग विद द जॉब ऑफर लेटर, तो जॉब ऑफर लेटर में क्या होता है कि नॉर्मल लोग बोलते हैं कि जॉब ऑफर लेटर अच्छा एक पेज में लिख दिया, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक पेज में आपने लिख दिया ऑफर लेटर कि वी आर हेल्पिंग टू वी आर ऑफरिंग टू देम फॉर दिस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। इट शुड बी अ प्रॉपर ऑफर लेटर, प्रॉपर ऑफर लेटर। तो वो भी होता है कि बहुत एम्प्लॉय को वहाँ पे पता नहीं होता है कि जॉब ऑफर लेटर कैसा होता है। बहुत ऐसे जैसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे पेपर सिस्टम नहीं होती, उनको सिर्फ दे जस्ट इनवाइट देम, ओके यू बी एलिजिबल, वंस दे मेक एन इंटरव्यू यू कैन कम एंड जॉइन विथ अस। ऐसे स्मॉल बिजनेस में क्या है कि वो HR की तरह प्रोसेस नहीं होता है, सो दे डोंट नो हाउ टू मेक ए ऑफर लेटर, so they can find out this kind of offer letter from Google as well. So Girish, most of the students usually get very flustered with the changes that happen every year. तो ये केस में कैसे हैं changes? अच्छा, दैट्स गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जैसे चेंजेस में पहली चेंजेस ये है कि अगर आप इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर 190 वीज़ा विथ 1 year of study, you can be only eligible if you have studied if you have enrolled before 31st of July. अगर आपकी 1 साल की स्टडी है 31st जुलाई से पहले, लाइक मैं एनरोल किया है 31st of July से पहले, और आप 1 साल के नेक्स्ट ईयर जुलाई में ख़त्म करते 2018 में, तो यू बी एलिजिबल फॉर 190 वीज़ा। अगर आप 31st जुलाई के बाद एनरोल होते हैं, इफ़ यू आर एनरोलिंग आफ्टर 31st of July, you require to study for 2 years, you require study for 2 years minimum, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे 190 के वीज़ा के लिए। फिर और एक मेजर चेंजेस आ रहा है, जो आ रहा है जॉब ऑफर लेटर में 190 वीज़ा में। इफ़ यू अप्लाइंग 190 स्टेट नॉमिनेशन वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ऑफर लेटर इन लाइन विद योर स्किल असेसमेंट, तो यू फ्रॉम द 1st October 2017 यू मस्ट वर्क मिनिमम 3 years इन ऑक्यूपेशन। सो वहाँ पे जिस एम्प्लॉय ने आपको ऑफर किया है वहाँ पे 3 महीने आपको काम किया होना चाहिए। सो यू मस्ट वर्क दैट फॉर 3 months मिनिमम, एंड वंस यू वर्क 3 months मिनिमम, देन यू कैन बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 190 visas in state nomination with job offer letter.
Okay. तो ये रिक्वायरमेंट है, जो ऑफर लेटर अगर लाते तो 1 अक्टूबर के 2017 के बाद ये रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। तो जो भी करना है तो अक्टूबर के पहले करना चाहिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो मेक श्योर यू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर 1 अक्टूबर 2017। तो ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन 1 साल स्टडी किए 31 जुलाई 2017 के बाद यू कैन बी एलिजिबल बट अंडर 489 वीजा। तो इतना मेजर चेंजेस तो है नहीं, ये 2 चेंजेस जो है मेजर चेंजेस है इन फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाई लाइक इफ यू वांट टू apply for job over there, and if you could get an offer letter over there, if you are getting a genuine job offer letter there, you should apply for state nomination over there. Thank you so much, Girish, for your time and your information. I'm sure you will have a lot of clients again. Yeah, we will definitely. Thank you. Bye. So that's it, viewers. You've seen everything you want to know about state sponsorship visa for Tasmania, and I'm sure you would want to go there. So until next time, bye. Do you want to live and study in Australia? So which stream of professionals are usually struggling to apply for the state sponsorship? Residence visas, and they have finished their qualification 1 year back or 6 months back. Then what are you waiting for? Now it's easy with the new state sponsored visa. In this episode we will cover in detail about ACT sponsored visas.